Good afternoon, class 4. Welcome back to our video classes, students. How are you all? Hope you all will be doing good in your home. So class, we are continuing the chapter number 6, adaptation in plant. Chapter number 6, adaptation in plants. And in the last video class, I remember we have completed up to plants in grasslands. Plant in grasslands we have completed, although we have completed this chapter in the live class. But I will give you the video classes, because by the video classes you can take a revision of the chapter. Okay, so today we are going to discuss the new topic of the same chapter, plants in rainforest. The new topic of the chapter is plants in rainforest. Okay everyone, so all of you take out your book, page number 47, science book, page number 47. The new topic is plants in rainforest. ठीक है, so let's continue student. Okay, let's continue. Now first I will read, then I will explain. So look at the book, put your finger where I am reading. Rainforest are regions that receives very heavy rainfall. So rainforest are the region, मतलब ऐसा place है. Region means place. Here I am writing the difficult word also. Region means place. ठीक है, रेन फॉरेस्ट इज द रीजन और द प्लेस जहाँ पे बहुत ज़्यादा, हैवी मतलब बहुत ज़्यादा, इन वेरी मोर अमाउंट, हैवी मीन्स मच मोर अमाउंट, मच मोर, बहुत ज़्यादा अमाउंट में बारिश होती है. ओके, दैट टाइप ऑफ एरिया इज सेड टू बी एज रेन फॉरेस्ट एरिया. The roots of the trees in rainforest spread in all direction and do not grow deep into the ground. As we all know, जो roots होते हैं उनको पानी लेने के लिए deep into the ground जाना पड़ता है. But the trees or plants, मान लो this was the place of the area जहाँ पे the rainforest का plain है, plains area है, and these are the trees. For example, okay. These are the small trees, big trees, बहुत सारे trees present हैं. जो इनके roots होते हैं ना बेटा, वो क्या होते हैं, they are और अब ज़्यादा वो deep into the soil नहीं जाते, वो ऊपर में ही होते हैं. They didn't go deep into the soil, वो ऊपर में होते हैं roots. Why? What is the reason behind this? The reason is because this is the rainforest area. यहाँ पे continue बारिश होती है, तो यहाँ पे तो पूरे upper layers में water present होंगे, तो इनको deep into the soil जाने की जरूरत ही नहीं है for water. They will get water from the above layer of the soil itself, sufficient amount of water for their growth. Okay, now this prevents the trees from falling. The tip of the leaves of plant in rainforest are modified in such a way that the raindrops fall off easily. अब क्या होता है, these roots were present in above the ground. ये क्या करते हैं, they help the trees to fall down. उनको गिरने से बचाते हैं. जैसे trees हैं, खड़े हैं, तो आंधी आ रही, तूफान आ रहा, तो उनको गिरने से बचाते हैं. Okay, they helps the trees to fall down. Clear हो गया? Next topic, next characteristics of the trees in the rainforest. इनके जो leaves होते हैं वो ऐसे नीचे की तरफ होते हैं. ठीक है, थोड़े से नीचे से झुके हुए होते हैं, तो जैसे ही रेन ड्रॉप्स आते हैं तो वो इजीली स्लाइड होकर नीचे गिर जाते हैं. अगर लीव्स नॉर्मल ऐसे होंगे तो रेन ड्रॉप्स आएंगे तो लीव्स यहाँ पे रुक जाएंगे, लीव्स पे रुक जाएंगे रेन ड्रॉप्स. बट वो क्या होते हैं, ये दे आर नैरो, वो झुके हुए होते हैं जमीन की तरफ, तो जैसे ही पानी गिरती है तो वो जो रेन ड्रॉप्स है वो नीचे की तरफ गिर जाते हैं. ओके, रबर, teak and cashew are example of trees found in rainforest. These three plants, rubber, cashew and teak, these three plants are the example of trees present in the rainforest. Okay, several varieties of orchids and other flowers bloom here due to the warm and humid climate. अब बहुत सारे जो varieties के plants होते हैं, ठीक है, flowers, especially flowers, ठीक है, जैसे कि orchid is a flower and other flowers also bloom. Bloom का मतलब होता है खिलना. ठीक है, bloom का मतलब होता है खिलना. Bloom, the meaning of bloom is खिलना. Bloom means
remember the proper word, but bloom means खिलना. जब फूल खिलते हैं बहुत सुंदर दिखाई देते हैं, that is the meaning of bloom. And here due to the warm and humid climate, warm मतलब बहुत ज़्यादा गर्म, and humid means moisture present in the climate. Okay, because there is 24-hour rainfall is there, 12 months rainfall is there, so the weather in the rainforest plains, rainforest area, the climatic, the weather is humid, moisture present होता है, ठीक है, चिपचिपा होता है, humidity present होती है. Okay, now sometimes the tall trees cover the small plants and block the sunlight from reaching them. अब क्या होता है, कुछ टाइम पे जो बड़े बड़े टॉल ट्रीज होते हैं, यहाँ पे छोटे छोटे स्मॉल प्लांट्स होते हैं, ठीक है, स्मॉल प्लांट्स प्रेजेंट है, वो क्या करते हैं, दे आर द टॉल एज दे कवर द स्मॉल प्लांट्स. जो सनलाइट होता है वो प्रॉपरली फिर स्मॉल प्लांट्स पे फॉल डाउन नहीं होता. ओके, दिस इज द सन फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग, ठीक है. तो वो क्या होता है, डायरेक्टली जो सनलाइट होती है, दे आर नॉट रीच टू द स्मॉल प्लांट्स. ओके, नाउ so these small plants climb up the trunk and branches of the trees in order to get sunlight for carrying out photosynthesis. अब क्या होता है, जो छोटे छोटे plants होते हैं, they will climb up to the big trees. जो बड़े बड़े trees होते हैं उनके ऊपर climb करके अपने trunk और अपने branches के थ्रू ऊपर चढ़ जाते हैं to get out the photosynthesis. Then they will make the food now, because sunlight is a product which required for the process of photosynthesis. If the sunlight will not there, how the plants make their food? That's why their trunk and their branches modified in that way, they will reach the top of the trees and they will get the sunlight and start the process of photosynthesis. So student, what is photosynthesis? क्या होता है photosynthesis? Photosynthesis is the process by which green plants make their own food with the help of sunlight, water, air and chlorophyll, which is present in the leaves of the plants. Okay, which is present in the leaves of the plants. ठीक है? So photosynthesis is the process by which green plants make their food with the help of sunlight, water, chlorophyll and air. ठीक है? And these food is prepared in the leaves of the plants. ठीक है? Leaves में prepare होता है food. Leaves is called the kitchen of the plants. Green leaves are said to be as the kitchen of the plants because the food is prepared in the leaves of the plants and they were transported to all the plants of the parts of the plants or trees. ठीक है? So leaf is called the kitchen of the plant and from this leaves this food is being transported to all the parts of the plants or trees. So this is photosynthesis. The three important things needed for the process of photosynthesis is air, water, sunlight and chlorophyll. 4 important things were needed for the process of photosynthesis. Okay, again I am repeating the definition of photosynthesis. Please students listen carefully. The process by which green plants make their own food with the help of sunlight, water, air and chlorophyll. Chlorophyll is the green pigment. Green color का pigment होता है which is present in the leaves of the plants. ये चारों चीज़ों से मिलके plants make their food and the food being prepared in the leaves of the plant. That's why the leaves are said to be as kitchen of the plant and from the leaves all the food is transported to all the parts of the plant. Okay, that's why the leaves are said to be as kitchen of the plant. Okay everyone, so by this the topic plants in rainforest is completed. Now we are going to discuss the last topic of the chapter, that is plant in marshes. All of you turn the page and open page number 48. Plant in marshes. Our next topic is plant in marshes. Just wait beta, I am rubbing the board. Then we will start the new topic, plant in marshes. So everyone, I have given you the homework to write down the definition of photosynthesis in your copy. Hope so you all people have done your work. Plant in
marshes. Now let's start the topic, plant in marshes. First I will read, then I will explain, so listen the video very carefully. Marshy areas are wet and found close to water bodies or along the seashores. ये जो marshy area होते हैं ना, they are present just near the water bodies. Water body के आसपास present होते हैं. जहाँ पे मान लो this is the water body for example, तो ये marshy areas यहाँ पे present होंगे. और near the seashore और near the जो समुद्र का किनारा होता है वहाँ पे present होते हैं. ठीक है, because marshy areas में बहुत ज़्यादा दलदली पानी जैसा एरिया होता है. Okay, these areas have, as you can see in the picture given in your book here, this picture given in your book. These areas have clay soil. यहाँ का जो soil होता है that is clay soil, चिपचिपा होता है, बहुत ज़्यादा watery चिपचिपा होता है. clay जैसे हम लोग clay models वगैरह बनाते हैं तो clay कैसा होता है, चिपचिपा होता है, moisture present होता है. That type of soil is present in marshy areas. These type of soil has very fine particles with tiny air space within it. अब इसमें जो सॉइल जो होता है इसमें बहुत छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स होते हैं और उसमें एयर स्पेस प्रेजेंट होता है. ठीक है, इन ऑल द सॉइल एयर स्पेस, टाइनी एयर स्पेस, टाइनी मीन्स स्मॉल, छोटे छोटे टाइनी एयर स्पेस प्रेजेंट होते हैं. सो इट कैन होल्ड लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर. अगर उसमें स्पेस प्रेजेंट है तो इट मीन्स वो बहुत ज़्यादा वाटर होल्ड करके रखेगा. दैट्स वाई वो बहुत ज़्यादा चिपचिपा होता है, उसमें मॉइस्चर प्रेजेंट होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लॉट्स ऑफ वाटर. ओके, इट इज़ ऑल्सो वेरी स्टिकी. मैंने बताया ना चिपचिपा होता है, स्टिकी होता है. इट इज़ ऑल्सो वेरी स्टिकी. द रूट्स ऑफ प्लांट्स ग्रोइंग इन मार्शी एरियाज कैनॉट पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल. अब जो रूट्स होते हैं, मान लो दिस इज द watery area and here the plants present in marshy areas for example and meeting the plants. इनके जो रूट्स होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा अंदर तक नहीं जा पाते, घुस नहीं पाते. पेनिट्रेट का मतलब होता है go deep into the soil, घुस नहीं पाते, डीप नहीं जा पाते. ओके, hence the roots grow above the soil to take in air. Such roots are called breathing roots. अब क्या होता है, ये roots क्या करते हैं, above the soil grow करना शुरू करते हैं. This is the above the soil. This is the watery area, soil and the ground and the roots of the plants. These are the roots. अब ये क्या करते हैं, soil से above grow करना शुरू करते हैं. They start growing above the soil. What they do? जब वो deep into, they will not able to go deep into the soil, then they start growing just above the ground. Grow तो करना ही है. So what they will modify? They will modify themselves and they will start growing the roots above the soil. From there they get the air. अब यहाँ से एटमॉस्फेयर में एयर प्रेजेंट, वहाँ से इनको एयर मिलना शुरू हो गया. ठीक है, दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ रूट्स, मार्शी एरियाज में जो प्लांट्स होते हैं इनके रूट्स को क्या बोलते हैं, ब्रीदिंग रूट्स. दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ रूट्स आर सेड टू बी एज ब्रीदिंग रूट्स. ओके, नाउ some trees such as mangroves grow in salt water marshes along seashore. So the best example of plant in marshes is the mangroves. ठीक है, mangroves are the best examples of plants in marshes. वो near water bodies के भी होते हैं, even near the seashore they will grow. So the best example of the trees present, the plants present in the marshes is the mangroves. Okay student, so we have completed this chapter in the live classes also and today in the video classes also, plant in marshes. Again I am repeating the things, please read the chapter after the completion of video. Again and again in every video class, in every live class I am telling you this. Why? Because if you read the chapter the things will be clear to you. अभी हम बोल दिया, आप सुन लिए, फिर आप छोड़ दोगे तो चीज़ें आपको क्लियर नहीं होंगी. ओके, सो रीड द चैप्टर एंड आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन द एक्टिविटी ऑल्सो. सो इन द लाइव क्लासेस वी विल डू द this adaptation in aquatic plants, the next topic of the chapter, adaptation in aquatic plants. ठीक है, then the chapter will complete it and the next video class I will give the video on adaptation in aquatic plants. Okay student, so listen the video, see the video till the end. Okay students, thank you so much class, see you all in the next class. Thank you so much class 4.